Hello friend, how are you? Welcome to Tirpan Study Center. We are going to do today is very important MCQ. The MCQ question for a class 8th science chapter here. Chemical effect of electrical current. That's the most important chapter here and which will be very important from the exam point of view. And it will be important for this competitive exam also. And let's see what is the topic today. Today we discussion most important chapter here, chemical effect of electric current. Class 8 CBSE NCERT science here. That's important. And today Tirpan Study Center discuss a most important MCQ. MCQ is the most important for the exam point of view and also is a competitive exam. That's important. And let's see question here. Next question on your screen. Question here. When electrolytes are immersed in a water and electricity passed, the bubble formed on the negative terminal is actually dash gas. You know that is a question is very interesting. कि जब इलेक्ट्रोलाइट्स को पानी में डुबाया जाता है और बिजली को हम उसमें से गुजारते हैं, प्रभावित करते हैं, तो नकारात्मक टर्मिनल पर बनने वाले जो बुलबुले होते हैं वो वास्तव में कौन से गैस होते हैं। जब आप एक इलेक्ट्रोलाइट लोगे, पानी में डुबोगे और जब उसमें जो है बिजली प्रभावित करोगे, बिजली उसमें कनेक्ट करोगे, तो वो जो होगा उसमें नेगेटिव टर्मिनल यानी नकारात्मक टर्मिनल जो होगा उससे बुलबुले निकलते हुए नजर आएंगे। तो वास्तव में जो बुलबुले निकल रहे होते हैं वो कौन सा गैस होते हैं। ऑप्शन हियर हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑक्सीजन, डी नाइट्रोजन। You know that the question is very interesting. When the electrolytes are immersed in a water and electricity passed, the bubble formed on the negative terminal is actually hydrogen gas. The hydrogen gas, it means the A option is correct for this question. A, hydrogen. Let's see next question here. Next question on your screen. Question here, a tin can used for the storing of food are made by electroplating tin onto iron and why? Question is very interesting कि भोजन भंडारण के लिए यानी भोजन रखने के लिए उपयोग किए जाने वाले टीन के डिब्बे लोहे पर टीन का विद्युत लेपन करके बनाए जाते हैं। आपके पास खाने का टिफ़िन होगा लेकिन वो टीन वाला, प्लास्टिक वाला की यहाँ बात नहीं की जा रही है, टीन वाले की। तो टीन वाले जो होते हैं उन टीन वाले पर लोहे पर टीन का परत जो है क्यों चढ़ाया जाता है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि जो हम भोजन ले जाते हैं यानी टिफ़िन ले जाते हैं उस पे लोहे के टिफ़िन पे टीन की परत क्यों चढ़ाई जाती है। ऑप्शन है द टीन गिव अ शाइनिंग अपीयरेंस, बी to make the vessel cheap, C, tin is a less reactive than the iron, and D, to make the vessel lighter. Note that question is very interesting, but answer here clear. That is give the sign appearance. There's nothing is the right answer. Not a sign here. To make the vessel cheap, no way. The steel is very costly here. It means to B option is wrong here. Answer is correct here. C. Tin is a less reactive than iron. The tin is a less reactive than the iron. So, tin cans used to the food storing food are made by the electroplating tin onto iron. There is a C. Tin is a less reactive than to the iron. That's an important question here. The next question on your screen, question here. Which of the following is a bad conductor of electricity? Which of the following is a bad conductor of electricity? निम्नलिखित में से
कौन विद्युत का कुलचालक है, यानी बैड कंडक्टर, कुलचालक, जिसमें से विद्युत धारा प्रभावित नहीं किया जा सकता। इन चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है जिससे हम विद्युत धारा को प्रभावित नहीं कर सकते, यानी विद्युत का वो कुलचालक होता है। द ऑप्शन है डिजिटल वाटर, बी सिल्वर नाइट्रेट, B is a simple silver nitrate, and C is a sulfuric acid, and D copper sulfate. You know that question is very interesting. Which of the following is a bad conductor of electricity? The answer is clear here. Digital water. You know that not a simple water. It is a digital water. Digital water is here D2O. Digital water. And normal water is here H2O. The difference here. The digital waters like a rainwater. Digital water like a rainwater. They do not touch the ground. The drop is not touch the ground. There is digital water. So digital water is not contain a sodium. Digital water is not contain a sodium. But normal water H2O contain here a sodium. That's important here. That's important. It means the A option is correct. Digital water. Digital water is a bad conductor of electricity. And let's see next question here. The next question on your screen. Question here. Which of the following does not conduct electricity? Which of the following does not be conduct electricity? निम्नलिखित में से कौन विद्युत का संचलन नहीं करता है, यानी आपके समक्ष जो ऑप्शन है उनमें से कौन सा ऑप्शन जो है इस बात को दर्शाता है कि वो विद्युत का संचलन यानी विद्युत उससे नहीं प्रभावित हो सकती है। द ऑप्शन है शुगर सॉल्यूशन, बी विनेगर सॉल्यूशन, सी लेमन जूस सॉल्यूशन, and D caustic soda solution. You know that this question is very interesting. Which of the following does not be conduct electricity? There is an important answer here. Sugar solution. Sugar solution does not be conduct electricity, and B vinegar is a solution is a conduct electricity. A lemon juice is solution is also is a conduct electricity, and caustic soda is a solution, there is the conduct electricity. But sugar solution is not a conduct electricity. It means to the option A is correct here. Option A is correct. Sugar solution. That's important. And let's see next question here. The next question on your screen. Question here. On electric current can produce. On electric current can produce. A. Heating effect, B chemical effect, C magnetic effect, and D all of these. Question is very interesting. Question is very interesting कि विद्युत धारा उत्पन्न हो सकती है। विद्युत धारा किसके कारण उत्पन्न होती है? विद्युत धारा जो है किसके कारण उत्पन्न होती है? तो ऑप्शन इज वेरी इंटरेस्टिंग. हीटिंग इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट and all of these. You know that the electricity is produced here. Heating effect. Heating effect is the most important because the oldest time usage of a heating effect, that is a produce of electricity. And B chemical effect, it means to here today use many types of battery, lithium ion battery, lead iron battery. There is a chemical effect. It means to the electricity current is a produce here. It is a chemical effect. And otherwise magnetic effect, it means to the many types of turbine use a magnetic effect. There is a magnetic effect is a produce of electricity. It means to the A, B, C is correct. The answer is here D, all of these. All electric current can be produced heating effect, chemical effect, magnetic effect. It means to the option D is correct. Option D, all of these. That's important. And let's see next question here. The next question on your screen, question here.
A pure or digital water is. Pure or digital water is, यानी शुद्ध या अशुद्ध जल होता क्या है? प्योर वाटर यानी शुद्ध, अशुद्ध जल कौन सी होती है? तो आपको बताना है वो किस प्रकार की है, कैसा उसकी कंडक्टिविटी है। तो क्वेश्चन तो यह क्लियर है कि शुद्ध वाटर जो होती है, क्या ऑप्शन, देयर इज अ पुअर कंडक्टर, बी गुड कंडक्टर, सी बोथ ए एंड बी, एंड डी नोन ऑफ दिस। क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग। द प्योर एंड डिजिटल वाटर, you know that question is very clear. The pure water, it means to the rain water. A rain water is a bad conductor of electricity. It means to the option A is correct. Poor conductor. The pure water or digital water, a poor conductor of electricity, because there is no presence of salt in water. It means to the poor conductor. That is a good answer for this question. A option is correct. And let's see next question here. The next question on your screen, question here. Which of the following is a good conductor? Which of the following is a good conductor? It means to here, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा चालक है? आपको एक समक्ष जो है कुछ ऑप्शन दिए गए हैं और उसमें से आप बताना है कि कौन सा अच्छा चालक है। चालक का मतलब होता है दोस्तों जिसमें से जो है विद्युत धारा आसानी से पास हो जाती है, उसे हम चालक कहते हैं, यानी उसे हम कंडक्टर कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन है ए ब्रिक, बी स्टील, सी प्लास्टिक, डी कॉटन। यू नो दैट इज क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ गुड कंडक्टर? द गुड कंडक्टर हियर, ब्रिक इज मेड बाय द soil, and plastic do not conduct electricity, and cotton also do not conduct electricity. It means steel is a good conductor of electricity. It means the option B is correct. The steel is a good conductor of electricity. B option is correct here. And let's see next question. The next question on your screen, question here, polythene is, यानी पॉलीथीन जो होता है, जो जिसमें आप सामान कैरी करते हो, तो पॉलीथीन क्या है? पॉलीथीन इंसुलेटर है या कंडक्टर है? बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और पॉलीथीन का मतलब होता है दोस्तों जिसमें आप जो है साग सब्जी लेके आते हो, ठीक है, मंडी से, तो उस पॉलीथीन का क्या उपयोग हो सकता है? क्या वो गुड कंडक्टर है या इंसुलेटर है? तो ऑप्शन यहाँ बहुत ही काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ऑप्शन यहाँ अ कंडक्टर, बी इंसुलेटर, सी बोथ, and these are none of these. Question is very interesting. Polythene is, you know that question is very interesting and directly here. The polythene is a insulator because it was not a pass the current here. In many time there is an open circuit, you use a polythene because polythene is a insulator. There is not a tape here. You are use a polythene. It means to here a polythene is a insulator. B option is correct for this question. B insulator. And then let's see next question here. Next question on your screen. Question here. Electroplating is a based on. इलेक्ट्रोप्लेटिंग किस पर आधारित होती है? हमने इस चैप्टर में इलेक्ट्रोप्लेटिंग के विषय में बहुत ही पढ़ा है और आपको पता होगा कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग वो मेथड है जिसके अंतर्गत हम किसी भी वस्तु पर जो है उस तरह के तरल पदार्थों को चढ़ाते हैं। यानी जर्नल से मैं शब्दों में बताऊं तो चांदी पे जो है सोने की जो परत चढ़ाई जाती है, हम उसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो होती है एक्चुअली में किस प्रिंसिपल पे कार्य करता है? यानी देखा जाए तो इसका कौन सा रूल रेगुलेशन पर जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है वर्क करती है? तो हमारा यहाँ ऑप्शन है ए हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बी केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सी फिजिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यू नो दैट इस क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग।
electroplate is based on heating effect of electricity? No way. Heating effect is not a use of electroplating here. Magnetic effect is nothing to use of electroplating here. And see physical effect of electricity, nothing here. It means to the use of only chemical effect of electricity. The electroplating is based on principle or use a chemical effect of electricity. It means to the option is B is correct. Option B, chemical effect of electricity. That's important answer here. And let's see next question here. Next question on your screen. Question here. On electrical lamp glow due to. On electrical lamp glow due to. एक विद्युत लैम्प किस कारण चमकता है? आपने अपने घर में बल्ब जलाई होगी। आखिर जो बल्ब जलती है और उसके बाद चमक उत्पन्न होती है, वो चमक आने का क्या कारण हो सकता है? कभी आपने सोचा है? आप घर में जो है जाते हो, बल्ब जला देते हो, लेकिन कभी आपने बात पर ध्यान दिया है कि जो हम इलेक्ट्रिकल लैम्प जलाते हैं, आखिर किस कारण से जो है वो ग्लो करता है, यानी चमकता है? द ऑप्शन है हीटिंग इफेक्ट, बी मैग्नेटिक इफेक्ट, सी केमिकल इफेक्ट, डी फिजिकल इफेक्ट. You know that a bulb here use a tungsten wire. Tungsten wire, there is a flow of electricity, there is a heating, and heat is here glow. It means to the option A is correct. Option A is correct. Heating effect. On electrical lamp glow due to heating effect. The tungsten wire is a heat and there is a glow here. It means to the option A is a correct. Let's see next question here. The next question on your screen, question here. Tap water is a good conductor of electricity, while digital water is not because. That's the most important question here. नल का पानी बिजली का अच्छा वाहक होता है, जबकि अशुद्ध जल ऐसा नहीं करता है, तो क्या कारण हो सकता है? आपके घर में नल के पानी आते हैं, अगर उस पानी में अगर आप पानी गर्म करने के लिए रखो, ठीक है, किससे? रॉड से, तो अगर आप पानी को छूते हो तो आपको झटका लगती है, क्योंकि इसमें बिजली प्रभावित होती है. लेकिन वही अगर वर्षा के पानी अगर आप इकट्ठा कर लेते हो, इकट्ठा कैसे करना है? जो धरती पे टच न हो, ऊपर ही ऊपर आप जो है इसको इकट्ठा कर ले. अगर उस पानी को गर्म करने के रॉड लगाओगे तो उस पानी को छुओगे भी तो आपको जो है झटका नहीं लगेगी. तो आखिर क्यों? देखा जाए तो नल का पानी का जो सूत्र होता है वो H2O होता है, लेकिन अगर हम बात करें अशुद्ध जल की यानी डिजिटल वाटर की, तो इसका फार्मूला होता है D2O. तो फार्मूला से ही बहुत अंतर आपको नज़र आ रहा है. तो देखा जाए तो ऑप्शन है टेप वाटर कंटेन अ सॉल्ट, बी डिजिटल वाटर डू नॉट कंटेन अ सॉल्ट, एंड सी ओनली A is correct, is D both A and B is correct. You know that question is very interesting. The digital water is one fact here. Digital water is not contain a salt. Digital water not contain a salt, but tap water is contain a salt. Digital water is not contain a salt and tap water is contain salt. It means to the you drink a water, there is a salt here, and digital water is not contain a salt. It means to the option is A correct here. Tap water contain a salt. The A option is a tap water, but the digital water do not contain a salt. Digital water is not contain a salt. It means to the option is B correct. Digital water is not a contain of salt, but tap water contains salt. The option is B is correct, because examiner asks the question, the digital water is not good conductor. Why? Because digital water do not contain a salt. B option is correct here.
distilled water do not contain a salt. B option is correct. Let's see last question here. Next question on your screen. Why do we add a little disulfuric acid to copper sulfate solution during the electroplating? You know that question is very interesting कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग के दौरान हम कॉपर सल्फेट के घोल में थोड़ा पतला सल्फ्यूरिक एसिड क्यों मिलाते हैं। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जब हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं यानी इससे दूसरे परत यानी चांदी पर जो सोने की परत चढ़ाते हैं, इसके दौरान हम कॉपर सल्फेट घोल में थोड़ा पतला जो है सल्फ्यूरिक एसिड क्यों डालते हैं। किसी भी हम प्लेटिंग में क्यों डालते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। द ऑप्शन है टू इंक्रीज एसिडिटी, टू इंक्रीज कंडक्टिविटी, सी so that a color become a more as a pigment, and is to burn a copper sulfate. You know that is a question is very interesting. Question is very interesting, but you know that the sulfuric acid is the most important here because sulfuric acid is increasing a conductivity here. It means to the option is B is correct. There is to be increase of conductivity. The add a little dilute of sulfuric acid to the copper sulfate solution during electroplating because to increase our conductivity. It means to the B option is correct here. That's important here exam point of view. This topic was till this. We will do their next topic in the next part. If you like it, then please like, share, subscribe and share the video as much as possible. Do not think, subscribe and save in your mobile. Thank you.